हेलो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अहमद नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और हर 4 साल बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के शायकीन को एक मुंह पे रख के चपेड़ पड़ता है। और इस दफ़ा भी कुछ ही देर पहले अहमदाबाद में जो प्रिस्क्राइब्ड आवर था उससे 2 घंटे पहले इंडिया का ने बड़ा हमारे लिए अच्छा काम किया कि रख के एक चांटा मारा है। और उस्मान, आपकी नज़र में अभी तक जो ये 8 चांटे पड़ चुके हैं उसमें शायद सबसे दर्दनाक ये वाला था। इजिली बाय सम डिस्टेंस। ये जो गम आवर पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं मैं ये नहीं याद रखा था। देखो 2015 में जो वर्ल्ड कप में हारे थे उस वक्त तो टीम से कोई उम्मीद ही नहीं थी ना। उस वक्त मिसबा लेड टीम, यूनुस खान ओपनिंग कर रहे हैं, वो तो वैसे ही टीम गॉन थी। 2019 में आई थिंक बारिश हो गई थी, तो यानी थोड़ा सा स्टेट ऑफ प्ले अफेक्ट हुआ, पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उससे पहले फ्रैंकली अच्छा चलो 2011 की सेमीफाइनल जो थी, एक वो आई गेस नेशनल लेवल ड्रामा था, बट it was still like a closer game. This was an out and out, like, 8 for 36 to collapse hota hai, that's like a historic collapse. People will remember this match for those numbers. कि हाँ याद है यार, वो 8 for 36 collapse था अहमदाबाद में, and playing in Ahmedabad with zero Pakistani fans. I think there were दो थे, मैंने तस्वीर देखी थी गेटीज पे कि दो पाकिस्तानी फैन थे वहां पे, playing in Ahmedabad, with all that entails. I think अभी हमें समझ में आ रहा है फॉरन इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द विन दैट इज प्रोबब्ली द वर्स्ट ऑफ द 8, और 10 साल बाद भी आई थिंक unless they have a worse one than this will easily go down as the worst of the 8. आई थिंक व्हाट वाज अमेजिंग वाज कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की थी कि मैं अपने अपने एक्शंस को ब्लेम नहीं करूंगा, कि मैंने ये किया या मैंने वो नहीं किया तो इसकी मेरी वजह से वजह से हारा। बट आई थॉट कि एक पॉजिटिव सेंस में मैं आई वाज किलिंग इट टुडे, क्योंकि मैंने लंच में मटन की बहुत ज़बरदस्त बिरयानी खाई और साथ में ठंडी कोक थी, रायता, सलाद, लाइक सो, एंड देन लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। सो लाइक फ्रॉम माई एंड, मैंने as a Saturday with the Pakistan India daytime match, I feel I put in, a 5 for 31 or something in 10 overs. Like, मैंने, I नहीं, hit मगर every this, mark. this information is pointless unless you tell us what you did on the preceding matches of Pakistan सो India. दिस उस इज, दिन आपने मैंने क्या आई खाया? थिंक अपनी जिंदगी में कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया पाकिस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप मैच में, क्योंकि यूजुअली मुझे स्ट्रेस हो रहा होता था, और कि अगली आपने बार थोड़ा रोजा रख है लेना, मगर। अगली हाँ, बार अगली बार रोजा रख लेना, शायद आई मीन कुछ। नहीं, तो यूजुअली तो नहीं खाया है, यूजुअली स्ट्रेस की वजह से नहीं खाया है, और परेशानी और ये वो, तो इस दफा था कि भाई आराम से आप रिलैक्स करके देखें। एंड सो जब तक मैं आइसक्रीम खाया था 155 for 2, एट दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग दिस इज, एंड इट्स ट्रू, आई थिंक 2003 के अलावा दिस इज द बेस्ट दैट पाकिस्तान फेल्ट इन अ मैच। क्योंकि पिछले, जैसे कि कहा कि पिछले 2-3 वर्ल्ड कप्स में आपकी टीम वैसी ज्यादा कमजोर थी, तो आपके साथ ज्यादा उम्मीद नहीं। और हम्म क्योंकि ये सारे मैचेस इतने वन साइडेड हुए हैं और ऑलमोस्ट सारों में हम चेस कर रहे थे, तो चेज में हर दफा हो रहा था कि आपको शुरू से ही पता था कि इंडिया ने ज्यादा रन बना दिए, इतने हमसे नहीं बनेंगे। और जो जो अभी एक वो ग्राफिक आ रही है जो 6 दफा कोलैप्स हुआ है, तो उसमें आप बाकी सारे देखें तो उसी मरहले पे आया है कि अब आपके पास रन भी हैं, विकेट भी हैं, बट अब आपको स्टेप अप करना है और वहां पे हाँ आपको कोलैप्स हो हाँ जाता है। तो वो एक, यू कैन सी इट कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे अवे, और फिर जब वो होता है तो वो क्या एक्सपेक्टेड था। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ठीक है, एक तरफ से यादव ने थोड़ा टाइट किया हुआ था, बट सिराज आया था, इसको मारने लगे थे, दोनों ही 48-48 पे थे। जो जो पेनफुल पार्ट, मतलब अगर अगर बाबर और रिजवान की इनिंग्स एक फ्राइड अंडा होता है, तो जो सफेदी होती है वो खत्म हो चुकी थी, अब जर्दी खाने का टाइम था। तो दैट, एंड बाय द 35th ओवर दिस वाज फिनिश्ड, व्हिच इज प्रॉब्ली द बाय अर्लीस्ट एनी ऑफ ओवर दीस आपको मैचेस इज आपको गेटिंग। पता लग गया कि आपको एक्चुअली अंडे की yolk से एलर्जी है और आप नहीं खा सकते। फौरन से उधर आया एक डॉक्टर का नोट करनी, आप एलर्जिक हैं, अंडे आप की एक गोली। योग के अंदर से एक जिन निकला जिसने आपका गला दबा दिया। नहीं, व्हाट, मैं थोड़ा सा, मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, एंड मे बी इट्स बिकॉज आई एम द पेसिमिस्ट, मगर इवन एट 155 for 2 मुझे लग रहा था, बिकॉज एक्चुअली अगर आप बॉलिंग का एविडेंस थे, आप अगर स्क्रीन का एविडेंस देख रहे थे, तो कंट्रोल पाकिस्तान का नहीं था। They were like kind of really straining to keep up with the 5 and over rate, which anyway a lot of people उसी वक्त भी कह रहे थे कि यार ये तो 300 प्लस की पिच है, और it probably was maybe closer to like 300 kind of pitch, मगर
पाकिस्तान का कंट्रोल टोटल उस वक्त भी नहीं लग रहा था. कुलदीप यादव was bowling really well. जड्डू के ओवर्स, जडेजा के ओवर्स रहते थे. The only bowlers, Siraj looked like चलो इस पे रन्स बन सकते हैं, but I was always thinking who else do you score runs from? उस अटैक को अगर तुम देखो अहमद, उस अटैक पे आप किस और बॉलर से आप उम्मीद रख सकते हैं कि यार इसके मैं 8 पहली ओवर में बात 60 ये कि रन. कुलदीप यादव ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि वो शेन नहीं, मैं वॉर्न की आपको आत्मा है, एक मिनट बिफोर यू गो फर्दर, बिफोर यू गो, मैं आपको कुलदीप यादव का एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ बता दूं. हाँ वनडे तो में एक ठीक है, चलो 14. आपने दूसरी दूसरी ये भी है कि आप 20 ओवर यादव और बुमराह के गुजार लें, बकवास 80 80 60 70 रन बना ले उसमें, यू कैन जड्डू से स्टिल आप गो. are you saying कि जड्डू से आप यू गोना पिक अप रन्स इन इंडिया? नो वे यार. ब्रो ऐसा मतलब कि भाई किसी से तो रन आपको, चलो आप जद्दू से भी रन ना उठाओ यार, आप तब भी क्या कहते हैं, आपके बाकी 30 दो पे ओवर तो चले. बात ठीक है, बाकी 20 पे आप तब भी कितने अगर 180 भी बना लें, ठीक है, कुछ तो टारगेट तो होता, मतलब वो कि एक दफा लगना शुरू होते तो लगते तो सही. देयर इज नॉट लाइक कि आपकी, द थिंग एज यू पॉइंटेड आउट इज के ये बहुत, मतलब यूजुअली पाकिस्तान की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आपको कोई उम्मीद नहीं है. मैं ये सोच रहा था कि मेरी ना अभी कल कल परसों किसी ने इंटरव्यू किया, वो सब, अहमद भाई आपने कोई 18,000 वर्ल्ड कप देखे हैं, आप बताएं क्या क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. अब अहमद भाई ने इतनी दफा देखा, हम तो जलील होते रहे तो ठीक है, लाइक आई वाज आई हैव अ बिग memory bank of zalalat to kind of hold on to. I was just thinking, if you're a kid who's like maybe he was 12 in 2017, उस वक्त से आप देख रहे हैं, तो एक तो ये आपको सब आपके बड़े कह रहे हैं कि हमेशा हारते हैं, बट यू सॉ पाकिस्तान विन द चैंपियंस ट्रॉफी, then you saw Pakistan beat India in one World T20 and come very close to beating them in the other, where you reach the final. And this team, like a while ago, looked like the best pace attack in the history of the world. आई थिंक कि जो एक्सपेक्टेशन उस वक्त थी, और फिर उन्होंने जो अभी ये मैच देख, जो कोलैप्स देखा होगा, वाओ, लाइक आई माय हार्ट इज गोइंग आउट. अगर आपके नहीं, घर में कोई ऐसा मैं ये बच्चा जरूर है, कहूंगा कि इवन इफ आई थॉट कि पाकिस्तान फुली कंट्रोल में नहीं था एट 155 फॉर 2, आई डोंट थिंक इन माय वर्स्ट नाइटमेयर्स और एनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, व्हिचएवर वे यू लुक एट इट, आई डोंट थिंक आई वुड हैव एक्सपेक्टेड 8 फॉर 36 का कोलैप्स. ये मुझे इस टीम से ये नहीं लगा था कि 8 फॉर 36 का कोलैप्स होगा. And I don't know what kind of impact it'll have on them psychologically. We can only guess at that. Maybe it won't have anything. मगर 8 for 36 का जो collapse होता है, that is, ये पाकिस्तान करता था, right? In its heyday, this is like that level of. और फिर to have it topped off by दो जो बॉल थी ना बुमराह की, कुलदीप यादव ने वैसे ही आपको रखा होता है, had you completely in control, but those two deliveries from Jasprit Bumrah to get first Rizwan, not just any batter, Rizwan. पाकिस्तान का इनफॉर्म बैटर इस टूर्नामेंट का, लाइक कमिंग ऑफ द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, कमिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उसे जिस तरह से उसने बीट करा है, वो स्लोअर बॉल, लाइक आई वाज थिंकिंग बैक टू सम ऑफ द बेस्ट स्लोअर बॉल्स दैट वी सीन, obviously Akib to great patch we all remember, but Bumrah has like built up a collection of slower balls that is insane. Sean Marshwali in Australia, Ollie Robinson from around the wicket to get him LBW on a slower ball full toss, and now this, it was a crazy delivery, and then the next ball जो हम सब I don't know हमने डिस्कस करा था ग्रुप पे या नहीं, बट हम लोग देख रहे थे, इट लुक लाइक अ लेग कटर, राइट, द वन दैट गॉट शादाब स्ट्रेटन अ बिट. वो आके कॉम्स पे कह रहा है, बाद में पोस्ट मैच में कह रहा है कि एक्चुअली इट वाजंट अ लेग कटर, इट वाज रिवर्स स्विंग अवे स्विंगर. Like dude, that was a reverse swing away swinger. Like what a ball to bowl, and the only person who picked it was Waqar Yunus in the comms box. Because game sees game, my friend. Game sees game, as Monga also noted. So, okay, two of those आप बाय rationalize द कर लो वे कि चलो, गेम रिकग्नाइज गेम होता है, इतना आप गेम सी गेम प्रो. oh sorry यार, मैं चलो game recognizes game बहुत बड़ा लफ्ज है, recognizes मैं नहीं यूज करता यार actually. बस बस कर दे. But like so, I don't think anybody saw this kind of collapse, and I think that बुमराह का जो point है, the point is कि कुलदीप ने आपको वैसे ही फंसाया हुआ था. उनका फर्स्ट चेंज बॉलर पेसर हार्दिक पांड्या है. Like अगर सिराज का ऑफ डे चल रहा है तो you still have पांड्या to fall back भाई on. पांड्या 7 8 पर ओवर पे जा रहा था, जा रहा था, कोई मगर विकेट ली थी ना उसने, इंपॉर्टेंट ली थी ना. ये विकेट टेकिंग अटैक थ्रेट इस अटैक में हर एंगल से. That's why I'm just saying that 155 for 2 से भी I didn't think
at that point कि Pakistan are in total control of this. Partly it was also the fear कि यार वो लोग 320 भी बना ले, India will chase it down. You know, so I never thought they were fully in control, and then like obviously, you know, I feel like Kuldeep. उस्मान, ये मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल क्या था? एक्सपेक्टेशन है कि बस कि पाकिस्तान ऐसे कोलैप्स होता वैसे कोलैप्स होता। मगर मुझे 155 पे 2 पे जो अकेली स्ट्रेस थी कि अभी तक रैम्बो का एक्सटेंट आना है, मुझे था कि ये एक बड़ा क्रूशल टाइम पे कि अभी रन्स भी नहीं बन रहे और रैम्बो ने भी आना है, तो यहाँ पे गेम बदल सकती है। एंड ऑब्वियसली गेम उसी उसी दौरान बदली। In the बट India attack, I would put Rambo's threat between Bumrah and Kuldeep Yadav, somewhere between. या एंड दैट I वाज द think, थिंग कि वो कोइंसाइड हुआ है उसी स्पेल में। रोहित को मे भी शायद वो लोग बता रहे थे कि जी रैम्बो आने लगा है, तो अपने तुम स्ट्राइक बॉलर्स ले आओ। मैं करता हूँ कुछ। या बट आई थिंक कि अभी बहुत सारे लोग एक तो ना कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि इसको ड्रॉप करके उसको लाओ, उसको ड्रॉप करके इसको लाओ, ये वो। आई थिंक इस फॉर्मेट का एक फायदा, पोटेंशियली फायदा ये है कि आपके पास इतना टाइम है और इतने मैचेस हैं। और अभी कल ही मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर का वो देख रहा था और उससे किसी ने पूछा था कि अगर आप एक मैच, बहुत करीबी मैच लास्ट सेकंड में हारते हैं, या एक मैच आप ब्लो आउट लाइक 50 पॉइंट से हार रहे हैं, विच इज द हार्डर वन टू गेट मूव ऑन फ्रॉम। एंड ही इज लाइक कि जो करीब वाला मैच होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पूरी रात सोचते रहते हैं यार अगर मैंने ये किया होता, वो किया होता, ये किया होता। इज लाइक द मिनट यू लूज अ ब्लो आउट, तो उसी वक्त आप अपने आप से कहते हैं भाई अभी खत्म हो गया, जस्ट मूव ऑन। like in a way it's easier to deal with like a loss जो पाकिस्तान ने अभी जिस तरीके से हारा है, as compared to आप जैसे जो वर्ल्ड T20 में जिस तरीके से हारे थे मिसाल के तौर पे। That being said, obviously पाकिस्तान made it to the final। यहाँ पे अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ है, two major banana peels in store। like Afghanistan in Chennai on the one surface जहां आपको पता है कि बॉल स्पिन होगी, और अफगानिस्तान की अगर कोई भी चांस है छोटी सी इस टूर्नामेंट में कुछ करने की, वो उसी तरह की पिच पे है जिसपे राशिद खान और मुजीब these guys also वैसे ही एक कांटे वाली राइवलरी है, kind of always at each other, टेंस रहता है, टेंशन रहता है। मुझे I don't know, हम ये कह रहे हैं ना कि it's easier for a side to get over this kind of loss. Maybe it is in a way, मुझे लगता है, अंदाजा है कि जो टीम है ये, it probably is that kind of team that moves on from this kind of loss fairly easily and quickly. मगर I feel like उसमें ये भी एक है कि a loss like this sometimes amplifies जो आपकी weaknesses हैं, जो holes हैं आपकी टीम में ना, वो एकदम amplify कर जाती है, and they can then become a bigger thing in your head than they actually are. इतनी जो बुरी डिफीट होती है ना, देन यू काइंड ऑफ लाइक कि हाँ यार देखो हमारा मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा होला है। somebody like Babar for example when he made 50, and like that was a poor dismissal by the way, Babar. I know it's his get out shot and stuff, but when he makes 50, if he is the kind of captain जिसका trust वैसे ही कम है थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में, for him a collapse like this is waving all kinds of red flags in his head. Right, and that's the kind of thing that I think Pakistan would worry about. That a collapse like this will reinforce his worst fears about the middle, and then affect the way he and the top order continue batting. That's one fear. I mean, I think if that मेरे ख्याल में ये बात जायज़ है, क्योंकि बाबर की कप्तानी को जिस तरीके से हमने देखा है, डेफिनेटली बहुत एक कॉशियस कंजर्वेटिव वो है। और एट द सेम टाइम लाइक आई थिंक अगर रैशनली देखा जाए तो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में सबने रन्स बनाए हैं ऑलरेडी इन दिस वर्ल्ड कप या कमिंग अप इनटू दिस, राइट। तो 2 ही मैचेस में आपके पास काफ़ी सबूत है कि मिडिल ऑर्डर में मसला नहीं है। टॉप ऑर्डर में आपको मसला हो रहा था, अभी भी इट्स नॉट रियली सॉर्टेड। बट आई थिंक कि अगर मैं बाबर हूँ तो मेरी सबसे पहला फोकस होना है कि आई नीड टू गेट 100 सून। लाइक एक तो इस वर्ल्ड कप में हर बंदे ने 100 मार दी, कोई 17,000 100 हो चुकी हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली कि आज वाले मैच में दैट वाज आई थिंक बाबर लेवल प्लेयर से एट दैट मोमेंट दैट डिसमिसल वाज रियली शॉकिंग। कि इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग इज कि इट फील्स लाइक आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे, यू काइंड ऑफ अज्यूम्ड कि ये शॉट लग जाएगा, या यू टुक योर आई ऑफ द बॉल, और इट्स लाइक एन अनफोर्स्ड एरर, राइट। लाइक इट्स नॉट कि अनफोर्स्ड एरर, कि जो रिजवान वाली बॉल थी, शादाब वाली बॉल थी, और एक्सेलेंट डिलीवरीज,
You know, Iftikhar, even if he gloved that on, you could tell that Yadav, both Saud and Iftikhar were really uncomfortable playing him. Yeah, They kept yeah. playing him off the wrong length. Uh-huh. So the Babar dismissal is really shocking, because at that moment you just hit 50. You're expecting like this is the moment he kind of announces himself at this stage, इस वर्ल्ड कप में as कप्तान के तौर पे, like world It's class rivalry में, batter के तौर it's पे. rivalry में, yeah. Yeah, और इस I rivalry में felt like exactly. Babar ka jo shot, I mean that's his get out shot, right? That's his pressure reliever. He's Yeah, very good exactly. at playing that. He's very very Yeah, good. Like he turns it into a boundary shot quite often. जब उसका सही होता है ना, तो he actually turns it because he for goes so sure. fine. लेकिन I thought that dab he attempted it because he was trying to relieve pressure, but it was pressure that he himself had built, I think, on himself. He was, I think until he Yeah, was 33, he was going over run a ball. और फिर वो अचानक से काफी उसका स्लो डाउन हुआ था, एंड रिजवान एट द अदर एंड वाज टेकिंग रिस्क्स. रिजवान कोशिश कर रहा था कि आई नीड टू लाइक कीप गोइंग बिकॉज आई थिंक दोनों में अंदाजा था कि पिच थोड़ी सी स्लो हो रही है, इट्स ग्रिपिंग, स्पिनर्स आर टेकिंग अ बिट मोर कंट्रोल, बट रिजवान का रिस्पॉन्स था टू ट्राई एंड इम्प्रोवाइज बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ हिज गेम, टू काइंड ऑफ कीप अ मूव ऑन. Babar's response, I felt like it was to become more kind of inert, more conservative, and then he got himself into a position where उसे लगा कि यार मुझे pressure constantly relieve करना है, जो टिप टिप हो रहा है, I need to keep relieving it. This is my go-to shot. मुझे पता है कि मैं इससे करता हूँ, but the ball was too straight, it was too close, he came down on it too late, and yeah, it's a error of judgment, but I think it's a error born from his own kind of failings in building that pressure upon himself. हाँ, आई थिंक मैं इस बात को भी वही एतराफ करना चाहूंगा कि एज यू सेड, लाइक यूकेस के गेट आउट शॉट इज इट्स आल्सो स्ट्रेंथ. आप जब उस पे Yeah. रन बन रहे हैं, उसकी दाद दे रहे हैं, सो यू हैव टू एक्सेप्ट के एवरी नाउ एंड देन इल गेट आउट. इट जस्ट फेल्ट के वही, आई गेस, या मैं आई एम बीइंग हार्श, क्योंकि वो आप जब इस शॉट खेलते हुए आउट होंगे तो हमेशा बहुत खराब लगेगा. अगर Exactly, आप आउट exactly. होंगे टू सिराज, हु इज द प्रेशर द स्ट्रेस बस्टर एज रैम्बो वुड से, तो What a line. वो और भी बुरा लगता है. और ऑब्वियसली उसी के बाद आपका 8 विकेटों का कोलैप्स शुरू हुआ है, तो वेदर उसकी गलती है या नहीं है, मगर वहां पे जो It was a सिंबोलिज्म similar, उसकी आ crucial जाती moment. है. आई थिंक, बट आई थिंक, या लाइक, आई मीन, एक चीज ये भी मेरे दिमाग में थी, शायद एटलीस्ट फॉर ओल्डर पीपल हेयर एज वेल. इसके अब आप इतनी दफा ये हार चुके हैं, और जो सबसे वियर्ड चीज है ये जो आप मैचेस हारे हैं, कि जो वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं, तो उसमें भी वन साइडेड, एक दफा हमने हराया है, 2 दफा उन्होंने वन साइडेड हराया है, बट उसके अलावा 3 ऑल टाइम ग्रेट T20s हुए हैं. 2 दैट हैव द क्लेम टू बी द बेस्ट एवर. बट वर्ल्ड कप ओडीआई में पाकिस्तान हर दफा इतना बोरिंग मैच हारा है. मतलब, it's like, maybe other than Bangalore and South Africa, I don't expect too many Indians to be like, yaar, 2015 की highlights देखते हैं. Like, they just, like, these matches suck. Like, कभी Yeah. भी कोई खास वो नहीं हुआ. और I think यही सबसे सबसे weird चीज मुझे ये लगती है कि ठीक है, आप हारते आए हैं. जब उनकी टीम बुरी थी तब भी हम हार देते, जब हमारी टीम बेहतर थी तब भी, फिर उसके बाद No. shit bad, it's not made a difference. You haven't even had a competitive match. And I think मुझे इस दफा इस टीम से ये तवक्को थी कि यार ये थोड़ा सा ठीक है, 270 Competitive हो बना जाएगा. देंगे और 20-30 Yeah. ओवर तक लगेगा कि इंडिया को रोक सकते हैं, whatever the hell, like पूरा इतना तो आपको देंगे. हाँ. I really wasn't expecting this to be the worst of them ये all. collapse कोई नहीं expect कर रहा था, and I don't think anything in the team really had suggested कि ऐसा collapse होगा. And I guess probably, like you said before, you can write it off as one bad day, one really really bad day and all. But I think the difference also ODIs में जो होता है, and I guess this is a harsh reality. ODIs में, because it's a longer format, जो साइड बेहतर है वो अमूमन जीतेगा वो मैच, बिकॉज T20 में आप Yeah, कंडेंस कर देते हैं तो थोड़ी सी लक की इशू हो जाती है. A lot of things go in you rely on fortune a bit more, but ODIs में जनरली जो टीम बेहतर है, जो टीम ज्यादा मजबूत है, जिसका अटैक बेहतर है, जिसके बैटर्स बेहतर हैं, they 8 times out of 10 they'll win the match, right? वो दिन चले गए हैं I now. I just want you to know कि comments में इमाद वसीम की रिटर्न की ख्वाहिशात जो है फैल चुकी हैं कि फौरन से let's आ get जाए. Imad Wasim back.
फौरन से बुला दो, कप्तान बना दो उसे, कप्तान। एक कमेंट मगर ये है कि यार अगर आप जनरेशनल टैलेंट लाइक बाबर और शाहीन से भी नहीं हरा सकते तो आप कब हराएंगे? एंड आई फील दिस इज मतलब क्योंकि हम लोग द टू ऑफ अस हम लोग ये एपिसोड्स कर रहे हैं जिसमें हम पुराने मैचेस देख रहे हैं और पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल पक्का यकीन है कि पाकिस्तान में ना कौन 11 लोग खेल रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं कोई फर्क पड़ता। नहीं है, मतलब आपको हारना है I ही मैच। like maybe the exile era team और ये वो ठीक है, हाँ वो है, but even on its day वो कोई भी पाकिस्तान टीम एंड ये बहुत बड़ा क्लीशे है मगर आई थिंक उसका पॉइंट यही यही है क्योंकि क्रिकेट की जो इज अ गेम दैट्स लॉन्ग इनफ एंड उसमें कोई एक दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का इतना फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान जैसी टीम के जो ये रैंडम हरकतें होती हैं चलती रहती है। तो या लाइक आप इमाद वसीम को खिला यार लेते मे भी कुछ होता, लाइक ऑब्वियसली तुम्हारा, इमाद वसीम खेल चुका है पहले। तुमने जो पॉइंट, जस्ट टू इलस्ट्रेट, तुमने जो पॉइंट अभी करा है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। 92 में आप इमरान खान कप्तानी, जावेद मिर्जाद साइड, वर्ल्ड कप विनिंग साइड, स्टिल लॉस्ट टू इंडिया। 99 में आपकी या ऑल टाइम जनरेशनल एक टैलेंटेड टीम थी, बेस्ट ओडीआई टीम पाकिस्तान एवर हैड, फॉर प्लेयर, पोजीशन फॉर पोजीशन टैलेंट जो थी, 99 में आपकी बेस्ट टीम थी, वहां भी आप हार गए। नॉट जस्ट दिस, आपकी ये दोनों टीमें फाइनल खेलती हैं। इंडिया हैज अ टेरिबल टूर्नामेंट इन 92 एंड 99, हैज होलसेल चेंजेस टू द टीम आफ्टर दे कम होम, सो इट्स नॉट इवन लाइक इंडिया की अच्छी टीम थी, हाँ उनकी मनूज टीम थी, आपकी बेस्ट एवर थी, आप वो भी हार गए। हाँ, और तो फिर like, बाबर और शाहीन से आप यानी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन और बॉलिंग में आई डोंट, इस मैच में बॉलिंग के बारे में आप बात कर सकते हैं वाकई में? कोई आई क्रिटिसिज्म, आई जस्ट डोंट थिंक सो इतनी क्रिटिसिज्म हो सकती है बॉलिंग। यार 192 कौन डिफेंड करता है आजकल वनडे में, अनलेस यू आर ऑन लाइक अ या गटर टाइप। या आई डोंट थिंक आप 192 192। वैसे भी डिफेंड नहीं कर सकते आप। और फिर खास तौर पे यही है कि अगर अगर जैसे ये चेन्नई या कुछ ऐसी जगह पे है जहां पे वो, या फिर मौसम एकदम से बदला हो कि बारिश का एक स्पेल आए और फिर आपकी बॉलिंग आ रही है, until something like that has happened, मतलब वो तो ऐसे ग्राउंड पे ऐसी सिचुएशन पे no one is expecting you to defend that anyways. And I think जो हाँ again पाकिस्तान की टीम के साथ इस बॉलिंग अटैक के साथ, हर बॉलिंग अटैक के साथ, but this is a very talented one, but इसके साथ भी कि if there was a good target, all of these guys would have been bowling differently or maybe would have या found another thing, and if it wasn't, it isn't, मतलब इसके बारे में आप कुछ खास कर नहीं सकते। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इनफैक्ट वसीम भाई से हम लोग ने जब पूछा था कि why does Pakistan have these crazy swings, और he was like कि भाई आप अपने मुल्क को देखें, उसमें इतना क्रेजी है तो हम भी उसी मुल्क की पैदावार है, हमारा भी यही सीन चलता है। उसी तरीके से एक तो ये खत्म होगी लाइव ब्रॉडकास्ट तो मैं फिर इसको डाउनलोड करके जो क्लीन विदाउट एनी इश्यूज फुटेज अपलोड कर दूंगा, बट तब भी इतने लोग कहते हैं इंटरनेट सही करा लो, इंटरनेट सही करा लो। वेयर डू यू थिंक आई लिव? आई लिव इन पाकिस्तान ब्रो। तुम्हारे ख्याल में क्या मेरे पास इलॉन मस्क के वाईफाई का पासवर्ड है कि मेरे पास इंटरनेट सही कर? कहां से इंटरनेट सही, कहां से? मतलब दिस इज द बेस्ट ब्रॉडबैंड इन द एरिया, आई हैव ट्राइड 100 ऑफ देम, ओके मे बी नॉट 100 बट लाइक ट्रस्ट मी, इससे अच्छा इंटरनेट नहीं हो सकता। बट सही वे है, लोग और ऐसे इंटरनेट सही कर दो। नहीं यार, इंटरनेट आपका खराब नहीं, मेरा खराब है। लाइक आई एम द इट्स वन जिसमें बेसिकली द हाँ थिंग इज कि इट ब्रॉडकास्ट फ्रॉम माय एंड, तो अगर मेरी एंड पे हाँ, मसले हो रहे थे इट इवन messes up वो तो yours। फिर मैं थोड़ा सीना बड़ा हाँ करके, नहीं मगर जो भी मेरा सीना इंटरनेट अपना तान रहा है मैं उससे पूछना चाहता हूँ भाई कौन सा इंटरनेट है पाकिस्तान में? ऐसे बात करते हैं लोग, जी भैया गरीब मुल्क में रहते हैं हम, आपको फटाफट मैच खत्म होने के बाद मनोरंजन दे रहे हैं, आपको इंटरनेट से मसला है, 2 मिनट बाद मैं लगा दूंगा, आधे घंटे बाद जो है वो वीडियो देख ले। तो हर कमेंट में इंटरनेट यार। ये प्राय रात लाइव सीन था पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम से पोस्ट डिफीट, अहमद नकवी अपनी इंटरनेट की बातें कर रहे थे लाइव फ्रॉम अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लाइव लाइफ में इसका इसका जो जो मैं आपको सबक सिखाना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में अपनी तवक्कुआत थोड़ी रियलिटी के नजर में रख के रखे ना, कि भाई मतलब अब एक बेचारा आदमी एक गरीब मुल्क में रह रहा है, उसमें उसका इंटरनेट जैसा तैसा है वो चल रहा है, ठीक है, आप तक वीडियो आ रही है, आप इस बात पे खुश हो।
यार मगर बिजली नहीं है, इसी गैस बात पे, नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है, हम लोग को इंटरनेट चाहिए। इसी बात पे हमेशा याद दिलाना चाहिए व्यूअर्स को, जो एक बेसिक डिफरेंस इन रिसोर्स इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेट में है ना, कि जहां इंडियन क्रिकेट में हार्दिक पांड्या के कोई 15 तो उसका अपना ऑन्टराज है सपोर्ट टीम का, और यहाँ पाकिस्तान की पूरी टीम में शायद 3 लोग हों, ना कोई बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट है, हार्दिक पांड्या के एक एक वेज न्यूट्रिशनिस्ट है, एक प्रोटीन अलग से न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, कुछ लाइक इट्स अ डिफरेंट लेवल, राइट? तो असल सवाल जो हम अब उलट के पूछते हैं ये है कि इंडिया क्यों नहीं जीतता और वर्ल्ड कप? इंडिया को तो हर वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। I mean, बट I feel that's the only way of like Allah Mia saying to us, "I still like you guys." It's just like, you know, तुम लोग मतलब हर दफा जब मैं हम लोग हारते हैं, I'm just like क्या सीन है, मतलब can't you give us हाँ, even one? But I नहीं, think कि उसमें वो है कि फिर इंडिया खुद नहीं जीतता है, तो होता है कि चलो यार ये वही कॉन्सलेशन भी है, ये कॉन्सलेशन वो है, है कभी कभार लेकिन हम भी जीत जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। यार मगर इस बार वाकई में मैं बात कर रहा था अपने कॉलीग से, और मैंने उनसे लाइक आउटराइट सीरियस सवाल पूछा है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया कैसे हारेगा, यानी इट्स गॉट एवरीथिंग, लाइक द साइड इटसेल्फ ऑफ कोर्स हैज गॉट एवरीथिंग, and it is a very very strong side, but like what twist of fate will it take for them to not win this one? I'm like, I'm wondering kya hoga, will they come into like a red hot South Africa in the semi-final who will then lose in the final themselves, obviously, because they're never going to win? I Kya mean, hoga, I kya s- I scenario feel hai? I feel उस्मान के अम, ये जो उस दिन मैं एक बात कर रहा था, जो क्रेजी स्टैट है कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है कि आई थिंक क्या था कि they've एक won one नॉकआउट मैच knockout. जीता है। They हाँ, won one एक knockout जीता and they've lost three, including one है। at home. And the one they lost at home, उस जमाने में अगर याद करें कि वो था कि इंडिया जो T20 के साथ कर रहा है, उसने बदल दिया है, और डबल भागता है कोहली, और उसका बॉडी फैट इतना है, ये वो, and then West Indies came and was just like good night. Like it was Yeah, amazing. here to Like एक appreciate it. proper Thank you. ideological battle था कि हाँ, हम डॉट्स और छक्कों पे चलते हैं और देखो हम जीत के दिखाते हैं तुम्हें। That's the closest they've come since the IPL to winning this. So किसी ना किसी तरह ये हमेशा मैच हार जाते हैं. They've lost so many semi-finals in very similar fashions to how Pakistan loses to them. कि super anticlimactic. इनके हाँ, सारे बड़े प्लेयर नहीं चलते हैं उस मैच में, हाँ, और वही धोनी एंड में आप दुआएं कर रहे हैं और रन और आउट फिर हो रहा है, हमेशा ये वो। हमेशा रिएक्शन भी हमेशा होता है कि यार ये क्या, आईपीएल में सब इंजर हो जाते हैं, आईपीएल में थक जाते हैं और फिर वापस आते हैं, आईपीएल ने क्या दिया है हमें, और फिर अगेन द साइकिल स्टार्ट, बट Yeah. I'm wondering whether to bring up the point that a lot of, I think, like guys like Karthik Date and others also bring up, is that कि यार ये कभी कभी आप ओवरसाइज इंपॉर्टेंस देते हैं टूर्नामेंट्स को, जिसका और एक ही आप हार जाते हैं, तो दैट डजंट मेक देम अ बैड टीम, व्हिच इज फाइन, बट उसका जवाब ये है कि यार क्रिकेट इतना एक बकवास स्पोर्ट है कि उसमें बस आप यही, यू कैन ओनली लुक फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ स्टफ, कि ये टूर्नामेंट है, ये आपकी ट्रॉफी होगी। नोबडी Yeah. रियली केयर कि आपने बॉर्डर गवास्कर, वेल दे डू ऑब्वियसली केयर कि आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है, लेकिन इतनी कोई अहमियत नहीं है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की इन फ्रंट ऑफ एन आईसीसी टाइटल, राइट? दैट्स स्टिल लाइक इट इज स्टिल द काउंट, द थिंग दैट यू काउंट। और तो दूसरा अभी जब हम लोग बात करते हैं तो कमेंट में किसी ने कहा है कि हमें इस मेंटालिटी से बाहर निकलना है कि टैलेंट से और मेथोडोलॉजी होनी चाहिए वो। तो आई एग्री विद यू, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, और मतलब पीएसएल में seen up close lots of different teams try a lot of different things, and ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में मेथोडोलॉजी नहीं हो रही काफ़ी। यू नो मिसाल अगर मैं दूं मैचअप्स की, तो ये सारे पाकिस्तानी प्लेयर उस सोच के साथ अब टैक्टिकली जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं है कि जो दुनिया में बेयर जो जो लाइक द आइडियाज दैट आर बीइंग डिस्कस्ड आप उसको बिल्कुल भी ना करें। बट जैसा कि वही हम कह रहे हैं कि बिकॉज क्रिकेट में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैन एंड अप हैविंग एन ओवरसाइज्ड इम्पैक्ट, एंड दैट particularly conditions are so variable कि एक दफा भी पिच थोड़ी मुख्तलिफ और आपके पास एक बॉलर है who can really run through it, you can have an outsized impact. That's usually how Pakistan ends up doing things. और उस सेंस में कि yes it would be great to have a methodology, but वो limitations आपको इसीलिए में दिखती हैं क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होती है। सो एट सम पॉइंट दैट मेथोडोलॉजी कम्स अप अगेंस्ट रियलिटी, और वो उसको कितना बदलना for any coach of the Pakistan team to do it, I don't they there's a lot of limits to what's possible. Yeah, the one thing that the one thing I think ये लोग कर सकते हैं और इन्होंने कभी नहीं करा है,
और ये this is what New Zealand is very good at, is the limitation of the damage. यार चले आप हार गए मैच, मगर 2019 का मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबको याद है कि आप इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि इट्स लाइक अ डबल डिफीट. आज भी आपकी, आज के बाद आपकी जो पॉजिटिव एक अच्छी खासी नेट रन रेट चल रही थी, जो आपने थोड़ा बहुत बिल्ड करा था, माइनस में चली गई ऑलरेडी. यू नो, तो 20 ओवर रहते थे, 19.3 ओवर्स लेफ्ट व्हेन दे वन. तो लाइक दीस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, पाकिस्तान have never been good at doing this to really draw out an innings. जब आप एक you're in that middle of that collapse, कोई अल्लाह का बंदा वहां पे रुक के कहे कि नहीं यार, मैं बस 50 ओवर तक मुझे खेलना है, हम लोग 220 तक भी पहुंच जाएं, मुझे 50 ओवर तक खेलना है, ताकि फिर मैं थोड़ा सा खींच सकूं मैच को, हार जाए. यू नो, इन सब चीजों में धोनी बहुत अच्छा था, नासिर हुसैन टाइप कैप्टन्स बहुत अच्छे थे. लाइक you need to like just be able to avert this apocalyptic thrashing. हार जाए आप ये मैच 5 विकेट से और 5 ओवर स्पेयर हार जाते, पॉइंट सिस्टम में आपका फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एनआरआर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. दे जस्ट हैव टू बी स्मार्टर अबाउट दीस काइंड ऑफ थिंग्स यार. एंड आई फील लाइक पाकिस्तान एक बार आफ्टर एन 8 for 36 collapse, लाइक वी ऑल न्यू कि ये लोग 20-25 ओवर में हार जाएंगे. ये कोई चांस नहीं है कि दे ड्रैग इट आउट टिल द 40th. मे बी यू कांट ड्रैग इट आउट टिल द 40th, बट देन आप बैटिंग में थोड़ा सा खींच लो यार, थोड़ा सा खींच लो. But I guess, you know, then it becomes a question of skill. And Kuldeep was too good for guys. Like, you know, he took the 2 key wickets in that middle over. जो उसने Saud Shakil और Ifti की wickets लिए हैं. That was the difference between Pakistan, you know, 191 all out to maybe 220. अगर वो दोनों थोड़ा सा खेल लेते, if they could have played out Kuldeep, but they looked at sea against him, completely at sea. कोई अच्छा सा Well, I comment आने feel वाला we've hit the half hour mark, or that's all I have in me. I'm actually so glad that Pakistan India is over for another Yeah. at least a few years or a few months or whatever. अब अच्छी नींद आएगी. Exhausting तरीन, पता नहीं हर दफा आप जाके इस पे बात करें, इस पे लिखें, इस पे कोई कॉन्टेक्स्ट डालने की कोशिश करें. Like Pakistan India at the men's World Cup is the most boring narrative in sports. 100%. 100%. And unfortunately आज फिर से उसका एक और ही निहायत ही बोरिंग चैप्टर लिखा गया है. Until the final. Good night.